लिखा है किताबों के अंदर, वेरी फ्रेंकली। हाँ, वो कर दो। Yes, sir. Sir, it is, and sir, that is the thing that we or any young chartered accountant generally goes by the bookish knowledge. But then, as we mature in our practice and as we learn the tricks of trade, then it is when that our practice is actually becomes a value addition service to clients. I'll just invite Vitesh Pomal sir to the minute. So today is going to be a full-fledged bench for us with the past president of ICI, Amarjit sir joining, RCM joining in. It's going to be a full blaster series. Raju bhai is also there. If it was so good, I think you could have gone ahead with the CA bill discussion also. Sorry, sir. Sorry, I तो आप CA bill की discussion भी कर सकते थे. Sir, this is actually because to me that mudda is far more important than anything else today, very frankly. And members need to understand what it is. मतलब कि हम बहुत आक्रोश में हैं, बहुत जोश में हैं. We need to understand what all is it about. I think आक्रोश और जोश तो ठीक है अपनी जगह, वो उसमें कोई शक नहीं. Is it about the new bill that you are speaking, sir? हाँ. So we had a discussion today. So in CA Association Ahmedabad, many of our members, we meet at noon, and we had a brief discussion, and that's the message that was that I got, at least, that the members should be educated about what the bill is and how. That is exactly what I am saying. That is exactly what I am saying. Yeah, and how the disciplinary mechanism is only going to strengthen and work in the best interest of our profession. And rather than just, I have nothing against what has been done to the disciplinary, except one thing, that 3 members should have been chartered accountants. Presiding officer would have been a chartered accountant. That's all. If they are not sitting council members, I have no objection to this, because I think ultimately थोड़ा बहुत conflict of interest तो रहता है. If there is a sitting council member, हम माने या ना माने, वही election का वोट मांगने आते हैं, कोई disciplinary committee में बैठते हैं, तो कुछ ना कुछ conflict तो रहता है. But I have nothing against कि भाई पहले भी 2 गवर्नमेंट नॉमिनीज तो पहले भी थे, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट होते थे. अब 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट काउंसिल मेंबर ना होके अगर दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते तो भी बात ठीक थी. ये जो बात है कि सरकारी 3 होंगे, मतलब कि नॉन सीए 3 होंगे और सीए 2 होंगे, उसमें मुझे ऑब्जेक्शन है. और प्रेसाइडिंग ऑफिसर नॉन सीए होंगे, उसमें ऑब्जेक्शन है मुझे. अदरवाइज डिसिप्लिनरी कमेटी का कंपोजिशन में और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. But the good part, I think, is that as disciplinary mechanism becomes better, and as more and more CAs, if they are guilty, are punished, then I think in the longer term, it is a very good development for the CAs in practice. I have always believed that we have to act as regulators of the profession. We can't act like association of the profession, actually. Right. Correct. Very well. तो कहीं ना कहीं हम शायद इधर उधर हो जाते हैं. हम एसोसिएशन ही समझते रहते हैं अपनी. कभी हम इलेक्शन के लिए जाते हैं क्योंकि हमारा इलेक्शन मोड है, तो कहीं ना कहीं एसोसिएशन का ख्याल मन में रहता है. लेट्स बी क्लियर अबाउट इट. So sir, I'll just give a small. So Hitesh Pomal sir has also joined. So sir, I represent. हितेश जी हैं कहाँ पे? हितेश जी नजर नहीं आ रहे मुझे. He has just joined. He's still joining in. Okay. So sir, Monish is the president of our association. What is the name? Monish. Sir, I am. क्या नाम क्या है? Monish. 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 Okay. Yes. Okay. And sir, I represent the professional development committee of the association, and many of our members who are very regular and rather senior members have also started to join. तो मुझे राजू शाह भी दिख रहे हैं यहाँ पे. Yes. अब हितेश जी भी आ गए. शैलेश भी शाह साहब. नमस्कार सर. कुमार.
someone is raising hand. किसका ये हाथ किसका खड़ा है अभी तक? Someone has raised hand. I don't know who is he or she. सर नमस्कार। नमस्कार मेरे प्रभु, क्या हालचाल? बस बढ़िया सर, आप बताओ सर। आपका हुक्म हुआ, हम हाजिर हो गए। थैंक यू सो मच सर। ऐसा है हितेश भाई, हाँ आपके साथ एक ऐसी इक्वेशन हो गई कि जिंदगी भर ये चलेगी, जब तक मैं हूँ तब तक तो चलेगी। थैंक यू सो मच। मैं आपसे पहले ही जाने वाला हूँ, तो ये तो नहीं, नहीं, जब तक आप हैं, जब तक मैं हूँ तब तक चलेगी। अभी बहुत लेना है सर। तो let's be clear, so far as this part is concerned, God bless you. थैंक यू सर, थैंक यू So सर। you have miles and miles to go. आपने तो काउंसिल मेंबर बनना अभी। અવાજ તમારો કપાય છે, હું તમને આ નંબર પર ફોન કરું પાછો લેન્ડલાઇન થી। How is health sir? Good? Health wise okay, good? हेल्थ ठीक है, वो थोड़ी नी तंग कर रही है, बाकी ठीक है। अच्छा, नी अभी भी तंग कर रही है सर? हाँ, वो थोड़ा कोरोना हुआ था, उससे थोड़ा थ्रोट भी, इसलिए मैं आजकल ज्यादा बोलता नहीं हूँ। सवा घंटा 1.5 घंटा इससे ऊपर मैं बोलता नहीं आजकल, अदरवाइज थ्रोट स्टार्ट्स ट्रबलिंग मी। यस सर, यस। इन कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज दिन में 2 भी किए, ऐसा नहीं कि दिन में 2 नहीं किए, बट I have avoided this year doing 2 in a day. You have not gone anywhere this time, no? नहीं, इस बार मैं 2 में गया फिजिकल, एक तो NIRC का प्रोग्राम था और एक लुधियाना का था। लुधियाना को इन माय लाइफ टाइम आई कैन नॉट से नो, क्योंकि मैं जहाँ पे भी हूँ इट्स बिकॉज ऑफ लुधियाना। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट एंड आई मेंटेन इट। द रीजन बीइंग के जब उनका लोकल कैंडिडेट खड़ा रहता था ना काउंसिल में या रीजनल काउंसिल में, then also they used to vote me handsomely mean handsomely। अरे वाह, ग्रेट। तो मैं इसलिए लुधियाना का कर्ज तो मैं नहीं चुका सकता हूँ सर। अच्छा So sir, Hitesh Komal sir also had a lecture. So we already had 2 lectures sir earlier. Komal sir and Anand Sharma, they were both lecturers. फिर आपको आज करवाने की जरूरत नहीं थी, अगर हितेश जी को आप सुन चुके हैं। मैं तो नहीं सर। अरे सर, I am also eagerly waiting to listen to you this time sir। मैं तो इनका भगत हूँ। अरे नहीं सर। सर हम सब इनके भगत हैं। Boss, I am seeing you in the council next term. I am very clear about it. अरे नहीं सर, पर लेकिन विद दिस सीए अमेंडमेंट बिल क्या होगा सर काउंसिल में भी एक्चुअली? नहीं, काउंसिल में ऐसा है, डिसिप्लिन मैकेनिज्म के बारे में कोई मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, जो कुछ उन्होंने किया आई एम वेरी क्लियर। थोड़ा हमने सेक्रेटरी के पोजीशन को भी वीकन किया हुआ था, उन्होंने उसको स्ट्रेंथन कर दिया। यू सी, आप क्या सेक्रेटरी को टेबल पे बैठ के अपॉइंट कर सकते हो क्या? कि आपने ये कहा ये 4 नाम, इसको कंसिडर कर लो, इसको कंसिडर कर लो एंड अपॉइंट अ सेक्रेटरी। यू कांट डू इट यार, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू आर ए रेगुलेटर। सो पिछली 2 बार से यही हो रहा है कि यार इसका चेहरा मुझे पसंद नहीं, ये कर लो, इसका चेहरा पसंद नहीं, ये कर लो। ये नहीं होता अपॉइंटमेंट्स में। तो और फिर डायरेक्टर डिसिप्लिन में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा भाई हमारी कंसेंट ले लेना जब भी आप अपॉइंट करो एडिशनल डायरेक्टर या ज्वाइंट डायरेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या समस्या। इंडिपेंडेंस दे दी उन्होंने डायरेक्टर डिसिप्लिन को या ज्वाइंट डायरेक्टर डिसिप्लिन को थोड़ी सी, कि भाई आप घबराओ नहीं, गवर्नमेंट आपके पीछे है, अगर कोई आपको कहता है कुछ और करना तो आपको वो करने की जरूरत नहीं। इसमें भी कोई मेरे ख्याल में घबराहट की बात नहीं होनी चाहिए। और मुझे सिर्फ 2-3 चीजें समझ में, एक तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बिटवीन आईसीडब्ल्यू। आज भी आप आईसीडब्ल्यू वाले का स्टेटमेंट देखें, उसने हमारे अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया, तो किसकी कोऑर्डिनेशन होगी, किसके साथ कोऑर्डिनेशन होती जब मन बराबर हो। जब मन बराबर नहीं हो तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती, आप किसी को भी अपॉइंट कर लेना। तो आई थिंक दैट हैज बीन अ स्टेप व्हिच इज आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। उसमें यही होगा अगली बार से कि वो बोलेंगे जी आईफेक में मुझे भी जाना, हम बोलेंगे हमने जाना, तो वो फिर बारी बन जाएंगी एक दूसरे की कि भाई इस बार इनको जाने दो, इस बार इनको जाने दो, यही होगा। उसमें कंपनी सेक्रेटरीज भी जाना शुरू करेंगे। एक्चुअली मैं, अगर आपने मना कर दिया, मैं तो बोलता 2001 में हमें गवर्नमेंट ने ऑफर दी थी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट को टेक ओवर कर लो। मैं और छाजड़ साहब वर 100% इन फेवर।
some of the council members opposed it and it became a political issue in 2000-2001 elections. Very frankly, Oh, सरकार ने ये कहा था कि वहाँ बहुत बंगलिंग है, इसको आप टेक ओवर कर लो. हमने जोर लगाया काउंसिल में कि इसको टेक ओवर कर लो, साला कंपटीशन जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा. खत्म हो जाए. बट पीपल डिडंट एग्री टू दैट. Oh. लोगों को ये था कि साहब अगर हम ये करेंगे तो कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे. हम ये कह रहे थे अपना नंबर देख लो और उनका नंबर देख लो. मैं अभी लिखने वाला हूँ कुछ कहीं पे और यही कहने वाला हूँ कि एक गलती से अगर उसने राजू अय्यर ने आज कहा कि कंपटीशन होना चाहिए, तो मैं कहूंगा कंपटीशन जो है आपको होना चाहिए, आप बाहर वालों से करेंगे ना, पर यहाँ पे पहले कंपटीशन यहाँ पे खत्म करें अपना. पहले यहाँ पे कंपटीशन खत्म करते हैं, एक इंस्टीट्यूट बना देते हैं अकाउंटिंग की. उसके बाद फिर जिससे भी कंपटीशन करना होगा करेंगे, क्या दिक्कत करेंगे. दिस इज रिडिकुलस व्हाट ही इज सेइंग. उनके 2-3 प्रेसिडेंट ऐसे आए हैं जिन्होंने सिवाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपोज करने के और कोई काम ही नहीं किया जिंदगी में. और हमारी दिक्कत ये रही है कि हम शायद स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये समझ ही नहीं पाए कि वो क्या चाह रहे हैं. दोनों इंस्टीट्यूट हमारे स्टैंड को अपोज करती रही वहां पे खड़े हो गए और हम कुछ और कहते रहे, तो नेचुरली फेवर किसकी होगी? उनकी होगी. तो हमें But what will be with this II introduction? Say for sir, it is not there in the amendment. नहीं होगी अभी. नहीं होगी. देखिए उसके अगेंस्ट हम भी खड़े हैं कहीं ना कहीं पे. कई चीजें मैं कम से कम अपने बारे में डिस्क्लोज नहीं आई विल नॉट लाइक टू. कहीं ना कहीं हम भी कोशिश करेंगे कि नहीं हो. इंस्टीट्यूट करेगी नहीं करेगी मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट की कई लिमिटेशन हो सकती है, पर हम अपने तरीके से जो कर पाएंगे वो करेंगे, क्योंकि IIA का कोई अर्थ नहीं है यार. अर्थ नहीं है सर. हाँ, डिसिप्लिनरी तो ठीक है सर. टू स्ट्रेंथन द मैकेनिज्म. मैं तो कॉस्ट अकाउंटेंट्स को ये कहना चाह रहा हूँ कि हम आपको टैक्स ऑडिट की पावर्स भी दे रहे हैं, ऑडिट की पावर भी दे रहे हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग की हम पावर ले रहे हैं. कॉस्ट ऑडिट की आ जाओ ना, खत्म करो, एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं आज की डेट में. आप ले लो हमसे जो भी आपने पावर लेनी है, बैंक ऑडिट की ले लो, टैक्स ऑडिट की ले लो, जिसकी ले, पर हमें कॉस्ट ऑडिट की पावर मिल जाएगी, साथ में मैनेजमेंट की मिल जाएगी. यार तो यार जो भी होता, आई एम गोइंग टू राइट अबाउट वेरी फ्रैंकली. अच्छा. तो क्योंकि ऐसा है, मैं तो आई एम नॉट इनसाइड द काउंसिल, मुझे तो कोई चिंता नहीं. मुझे तो मेरा कुछ लेना देना नहीं है. आई कैन से व्हाटएवर आई वांट टू से. Yes. So I will not oppose government, but I will tell the government कि यार पहले एक काम करो, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट करो. इनको यही रहता है कि भाई टैक्स ऑडिट में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए. हम कह रहे हैं हम अपनी मोनोपोली खत्म करते हैं, आप हमारे साथ आ जाओ, खत्म करो बात. आपके मेंबर्स को भी राइट ले लो, पर हमारे मेंबर्स को भी राइट मिल जाएगा. आपकी मोनोपोली भी तो है कॉस्ट ऑडिट में, हमारी कहाँ? आपकी भी मोनोपोली खत्म होनी चाहिए. हाँ, दोनों एक हो गए तो फिर सबके लिए खत्म हो गए मोनोपोली. एग्जैक्टली. Sounds fair. I think Karan bhai, should we start? Yes. Just give me a minute and we'll start. Just give me a minute. Okay. कितने लोग एक्सपेक्टेड हैं? Sir, we have around 60 to 70 registrations, 65 to 70 registrations. So we generally, CA Association has generally senior members, and we get around 35 to 40 people in all lectures. Yeah, so it's not, so the number may look smaller, but generally we have senior members in the. करण भाई, इस साल मैंने ऐसी जगह भी लेक्चर दिया जहाँ पे 578 मेंबर थे और ऐसी जगह भी लेक्चर दिया जहाँ पे 19 मेंबर थे. तो मुझे कोई घबराहट नहीं. सर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं. कोई घबराहट नहीं. Sir, the point being that it's more about quality over quantity. We have senior members and who take their practice very seriously. Yeah. Absolutely not. इस बार स्ट्रेंजली 4 तारीख तक लेक्चर है. क्योंकि इस बार अपॉइंटमेंट तो आई नहीं है. अभी अपॉइंटमेंट तो आई नहीं है. अभी नहीं आई है सर. हाँ, अभी नहीं आई. I think only Union Bank is the one who's started. क्योंकि यूनियन बैंक के पास थे ही सिर्फ एग्जिस्टिंग ऑडिटर, नया ऑडिटर तो एक भी नहीं. कोई है ही नहीं. हाँ, कोई नहीं है नया. Exactly. So that is the only data that I was just
checking through that. क्योंकि हम भी यूनियन बैंक के ब्रांच ऑडिटर हैं, तो हमें कल आ गई 2 ब्रांचेस। हम लोग कैनरा बैंक में हैं सर। आपके तो 3 आई होंगी ना? 3 आई सर। आपके 3 आएंगी, तो कैनरा ने भी कोई ऑडिटर नहीं दिया। नहीं है, कुछ भी नहीं। Okay. Sir, I think we have the number. This is why, Majid sir, if you would give me the send. Please go ahead. No issue. Am I audible? Yes. Yeah. Okay. Good evening, everyone, and a very, very warm welcome from the Chartered Accountants Association of Ahmedabad, along with the Gandhinagar CP Study Circle. We are very, very obliged that everyone has joined in this new financial year. First of all, very, very happy new financial year to each and every colleague of mine who's joined in today. And I'm sure that, 22-23 will be a path-breaking year for all the chartered accountants. Every one of us gains and multiplies in a larger number. The dream of the Prime Minister, sir, who said that we will have the top chartered accountant firms based out from India itself, will also come true. With this, I think I will hand over to Chintan Thakkar from the Gandhinagar CP, so that post that we can go on to Karan. Chintan जी नमस्कार। Monish bhai, welcome Amarjit sir. We are very delighted to have you here, sir. It is like we have been hearing you many times virtually, like before COVID. I heard you physically as well at Ahmedabad branch, and it is our great privilege to that you are here, sir, on a Zoom platform to deliver the your experience and your speech, and on a very critical time, because today is first, so like everybody is going to start their audit from tomorrow, so everybody would be getting an advantage and the age of your knowledge. So everybody is delighted by that. Here many of the seniors, including Hitesh bhai, and everyone is here. So that itself shows that how learned you are, sir. And it is indeed our privilege that you are here on Ahmedabad CA Association today for the first time. That at Gandhinagar CP Study Circle, you must be aware of, sir. Gandhinagar is a capital of the Gujarat, sir. And we are for the first time that we have jointly organized this seminar along with Ahmedabad CA Association. So many of the members from Ahmedabad CA Association has also joined, along with the many of the members from the Gandhinagar CP Study Circle also has joined, sir. So members from our Gandhinagar CP Study Circle are delighted and pleased to get the knowledge and insight from your end. With these remarks, I hand over to Monish bhai for further proceedings. Thank you, Chintan bhai. Can I have Karan bhai your remarks for today's event, please? Thanks, Monish. So, very warm welcome to everyone on this forum. And today is the third lecture in our bank audit series. The earlier lectures were taken by Hitesh Komal sir and Anand Sharma sir. And today we have the practical aspects by Amarjit Chopra sir. I have an introduction of Amarjit Chopra sir, but we all very well know him. But still, I would just like read some of the highlights. So he is a CA from 1975 batch, and he has PhD he has recently done PhD on the topic of NPA management in banks. He is in profession for more than 46 years, and he is senior partner in GSA and Associates LLP Delhi. And he is also a teaching faculty in Delhi University for nearly 23 years.
He has been elected to Central Council of ICAI for 5 consecutive terms, and he was elected as president of ICAI in year 2010-11. He is nominated by Government of India on the board of Bank of Baroda, Indian Bank, Garden Distributors and Engineers Limited, and he has been nominated by Central Government as chairman of National Advisory Committee on Accounting Standards for a period of 4 years from 2014 to 18. And during his tenure, Ind AS equivalent to IFRS were actually introduced in the country. Apart from that, he has chaired the committee constituted by government to revise Mao Caro in 2003 and revise Caro in 2019. And presently, he is part-time member of NAFRA. He is also a member of Standing Committee on Corporate Laws constituted by Government of India for last 3 years. Apart from that, he is also on board of Tata Power Delhi Distribution Company, Tata Power Trading Company, a mutual fund trustee company, Eco Auto Limited, Accounting Research Foundation Limited, etc. And he is chairman of audit committee in most of these companies. So I think we are very honored to invite Amarjit Chopra sir, and I would invite him to speak on this. Thank you, Karan. Thank you, Manish ji, and thank you, Chintan Thakkar sir. And of course, thankful to the person who has brought me here, Hitesh bhai, whom I hold in very, very high esteem. Very frankly, he is more of a younger brother now than anything else, if you really ask me. दोनों के बाल नहीं है. Very frankly, both of us have lost hair. So we look like for that matter. So इसलिए मैंने बोला he's like a younger brother. देखिए branch audit seminar, बैंक ऑडिट सेमिनार, आप ऑलरेडी 2 सेमिनार्स कर चुके हैं मेरे हिसाब से, एक आनंद शर्मा जी का और एक हितेश जी का. मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं है, परंतु कुछ चीजें पहले 10 मिनट में ब्रांच ऑडिट के संदर्भ में कुछ बोलना चाहता हूं, उसके बाद फिर आई विल गो टेक्निकल. इस साल इट्स अ वेरी पिक्यूलियर सिचुएशन फॉर द प्रोफेशन. Peculiar situation primarily because of the fact कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडवांसेस की, जो ऑडिटेबल एडवांसेस की परसेंटेज थी, वो 90% से घटा के 80% कर दी. They have reduced it to 80%. It sounds very simple. Very frankly, Reserve Bank of India wanted it to be reduced to 70%. But then with the representation from the institute and some few friends, it has been actually reduced to 80% only. The impact of reduction of 10% is that this year, out of the public sector banks, only eight of the public sector banks did not have even a single vacancy, which is absolutely, I don't know what to say. Bank of Baroda, Punjab National Bank, Canara Bank, Union Bank, they didn't have even a single vacancy in their banks. Only banks like Central Bank of India, very, very few vacancies. Bank of India, hardly 90 vacancies. Then State Bank of India, much reduced number of vacancies. Bank of Maharashtra, virtually negligible vacancies. These banks had some vacancies. Otherwise, none of the banks had the vacancies. You just think over, Hitesh, I will definitely like your comment on this at some time. Today, Bank of Baroda has got an advance of 8 lakh crores. 10% reduction means 80,000 crore rupees of advances go unaudited. Okay. It is not the 80,000 crores, it is the number of branches which get out of the audit. And these are not the smaller branches which are getting out of the audit. These are even bigger branches which are getting out of the audit, particularly the mid-sized branches. Probably some of the branches which may have advances to the size of 50 crore or 60 crore may not be audited this year. I can quote the case of another bank which last year got 3,100 branches audited, and this year there are only 2,000 branches to be audited. Think of the situation. If they had reduced it to 70%, even the existing auditors would not have been accommodated.
some of the existing auditors have to go out. And these 4 banks, at least I know, where the vacancies have arisen, these have arisen primarily because of the fact that they wanted to be kuch to nahi le lo. Let's have some few names new. And what they have done is that they decided that we will not give 3 branches, we will give only 2 branches to the existing auditors. So based upon that, they have been able to accommodate some of the chartered accountants, some of the firms. So very unhappy situation to be in. But my worry is not this year. My worry is the subsequent years. Because we all know that the threshold limit for tax audit remained 40 lakhs for 2 decades, more than 2 decades. But once it started increasing, we know where it is now. From 40 lakh to what level? Now, once Reserve Bank of India has tasted this, that they could reduce it from 90% to 80%. And the ministry has not objected. Rather, ministry has supported this particular move. If you ask me, you never know when it goes to 70% or 60% or 50%. You will not know it. So, which means the branch audit will virtually be out. What are the reasons? I want to discuss that more importantly. Number 1, the quality of the branch audit. Hitesh Bhai is there. I think 90% of the branches don't receive any MOCs. 5% of the MOCs that we receive, out of the other, in respect of the other 5% of the branches that we receive, those are absolutely immaterial in nature. Only 5% are material probably, which can be made use of by the central statutory auditors or by the bank. We keep on saying that the banks don't allow us the time to audit. We keep on saying that they don't produce the information. We keep on saying that the GM does not allow us to classify an account as MOC and give an MOC. The branch manager does not allow us to give an MOC. These things are not going to work. No client wants to be qualified. Nobody wants a qualified report. Let's put a hand on heart. In how many cases, when we say that they don't give us the time, the branches don't give us the time, branch managers don't give us the time, the banks don't give us the time. In how many private clients you get the time? In how many tax audits we conduct in the month of April, May or June? Let's put a hand on heart and then answer it out. In how many cases, I think the institute needs to collect these statistics. In how many cases the reports or the urine which have been generated are in the month of May, June, July, August, September. And particularly when we go to September, how many urines have been created in the last 7 days of September? So who allows us to actually get the time? Nobody allows us to get the time. The private client does not give us the time. So where is the argument? There's no argument. And we keep on fearing that if we qualify or we give the MOC next year, he will give me the smaller branches. Firstly, I don't agree with this approach. Because the person who will be allotting next year may not even know what you did last year, very frankly. And even if instead of 50 crore advance, you get a branch of 25 crore advance, your fee stands reduced. I think this is our duty towards the profession, and we must perform our duty qualitatively under all circumstances. Unfortunately, it has not happened, and it has led to the present situation to a large extent. When we go, you can ask Aniket for that matter. I can say that, dare say that. You can ask the president for that matter. When we go to the Reserve Bank of India and say that if you leave so many branches unaudited, the frauds will remain undetected. The answer from the Reserve Bank of India people and the ministries, tell us a single case, not 2 or 3 cases. Tell us a single case where branch auditor has reported a fraud. And we don't have a reply to that. It's a matter of fact. The immediate response from the Reserve Bank of India is that you talk of that if the branches remain unaudited, the frauds will be committed. They say, please let us know in how many cases the frauds have been detected by the branch auditors. Forget even this. They say that after all, this ABD shipyard, ILFS, Videocon, Diwan Housing, all these accounts were with the banks and all these branches were being audited where these advances were there. Which branch auditor ever reported anything about these accounts? I think that is the problem.
where it lies. And the last argument which they have and for which we have no answer is, and of course, so far we have been defending ourselves very frankly. They say that if in the case of ICICI, in the case of HDFC, in the case of Axis Bank, in the case of IDBI, if these audits can be conducted without branch audit, and the central statutory auditors have no objection, and the institute has not directed those auditors that you cannot certify true and fair view without having the branch audit conducted, where is the need? Is it the cost of nationalization that PSUs have to have a branch audit or not? Because the fee of the private sector banks, audit fee of the private sector banks, overall fees of the private sector banks is in certain cases 1/15th or 1/20th of the fee which is being paid in the case of the PSU bank, public sector banks. So this question is being asked. We give the reply. I can tell you, at least at personal level, one has been replying to it. One has been able to defend the profession so far successfully, that all these private sector banks were born in an era of IT. Whereas all these public sector banks were born in an era when there was no IT. So all the records of these private sector banks are digitized. Even the loan and advances records are digitized, documents are digitized. Whereas in the case of public sector banks, these records are not displayed. So we have to visit the branches in the case of the public sector banks, which we don't need to do it in the case of the private sector banks. Mark my words today, in the next 5 years, the records of the public sector banks will also get digitized. When those records get digitized, the loan and advances records get digitized, what will be the need for someone to go to the branch level? I think that is the main question. So my humble request is that particularly the people who are in the Mufassal towns, they need to shed this particular inhibition. They need to shed this particular thought process that they have to depend upon the branch audit or the tax audit in the years to come. It will not work. It is not going to work under any circumstances. They need to depend upon the new areas of practice. It can be FEMA practice, it can be PMLA practice, it can be GST affiliate practice, it can be IT systems audit practice, it can be something RERA practice, it can be anything. It can be insolvency resolution practice, but it is not going to be bank branch audit practice or the tax audit practice. I'm very clear about it. And I think our leaders have to say this publicly, irrespective of whatever is the situation. Because if we don't say this, we are not able to show the members what is writing on the wall. It is writing on the wall that it is going to happen in the years to come. The moment the records of the banks get digitized, public sector banks digitized, particularly in respect of the loans and advances, there will be no need for the branch audits. Let's be very clear about it. Some of the faculties from West have been telling that Amarjit Chopra comes and frightens everybody. I'm not frightening anybody. I'm showing the mirror that we are looking at. It is the mirror that we have to look at. If we don't look at it, I think we are living in a fool's paradise in the times to come. Next year आ जाएगा, उसके next year आ जाएगा, उसके next year क्या होगा? Nobody knows. Very frankly, I'm very apprehensive of the after 5 years. What is going to happen to the branch audit? मेरे ख्याल में हमारे देखते देखते हितेश भाई देखेंगे कि क्या हुआ है. Branch audit का सब रूप पूरा बदला है. This is again going to be there. So let's be clear so far as this particular part is concerned. I start from here now. My request with folded hands to everyone in the profession, please maintain some quality, produce quality. Don't tell कि time नहीं मिलता, time मिलता है. अगर एक छोटी ब्रांच है 4 से 5 दिन लगाते हैं, no, heavens are not going to fall. Nobody stops you to devote 4 to 5 days in a smaller branch. And if in the case of a medium branch, you get about 7 to 8 days time, nobody stops you to do that. If it is a bigger branch, you may get even 10 to 12 days time. But the point is, are we understanding what the banking is? When I send a child across, I don't even tell him what is the letter of credit. I don't tell him what is a bank guarantee. I don't tell him what is cash credit. That child,
himself is confused. Cash and credit, दोनों चीजें कहाँ से हो गई? Cash भी है, credit भी है. How is it possible? He does not know what is the usance bill. He does not know what is the site bill. He does not know what is the usance LC, or site LC. He does not know what is packing credit. He does not know what is pre-shipment, what is post-shipment. And we have sent him to do the audit. We have not told him what kind of returns are generated at the branch level. If I know what kind of returns are being generated at the branch level, my audit becomes very easy. And I think banking is a peculiar industry where everything is being governed through the returns, calendar of returns, if you ask me. For every aspect, there is a return. For every regular account, there is a return. For a fraud, there is a return. For an NP account, there is a return. For sanction being exceeded, there is a return. For loss of any of the instruments, there is a return. For loss of token, there is a return. For the moment, first time an inoperative account is operated, there is a return. For what? Why do I need to look at the ledger straight away? I don't think I need to look at the ledger straight away. My audit methodology in the case of a branch audit has to be different from what is there in the case of a manufacturing client or what is there in the case of any other client. There your MIS may not work. Here the MIS works really. There are 3 circulars of late. Hitesh bhai, I will like to deal with these 3 circulars basically, and then we'll touch upon a little bit of the cash credit account, and then I will like to answer the questions. That's my plan. This year, first circular is of 1st October 2021, which is the master circular. Most of it is repetition of the earlier years. Second circular and third circular are very important. Second circular is dated 12th November 2021 and third circular is dated 15th February 2022, which is again clarificatory in nature with regard to the circular of 12th November. What does this circular of 12th November provide for? I think that is what we need to understand. And if any one of us is going to conduct the branch audit without reading these 3 circulars, believe me, we are going to come to grief. This circular says, number 1, all these years, when we have been going to the various branches, we find there are a lot of blank documents. When we come and at times we put it in the long form audit report that there are blank documents lying in the branches, duly signed by the party, duly signed by the branch manager. But the columns are not filled up. This circular goes on to say that bhai ye nahi ho sakta. It is not possible. All columns have to be filled up. In case of the new advances which have been sanctioned after 1st of April 2021, all columns need to be filled up by 31st of December 2021. And in the case of old advances which are prior to 1st April 2021, in those cases, all these columns have to be filled up as these accounts become due for renewal or review. We must understand why this has come in. It has come in because in some of the cases, when banks were trying to recover the money from the parties, they filed certain suits. The parties could prove कि जो इन्होंने कॉलम्स भरे हुए हैं और जो हमारे पास है वो डिफरेंट है. इन्होंने बाद में भरे हैं. These are all you can say कि इन्होंने भरा ही बाद में, हमारी तो कंसेंट उसमें थी नहीं, हमारे तो सिग्नेचर इन्होंने ब्लैंक पे ले लिए थे. The banks have lost some of the cases in those matters. Now it goes on to say that every document must contain sanction की डेट तो होगी, अमाउंट भी होगा, सिक्योरिटी की डिटेल्स भी होंगी. अगर EMI है तो EMI कब ड्यू है, पूरी रीपेमेंट ड्यू डेट्स, और EMI में बाइफर्केशन क्या है, इंटरेस्ट की और प्रिंसिपल की. Because we all know that in the case of EMI, in the earlier years of EMI, it is the interest component which is more, and in the later EMIs, it is the principal component which is more to be recovered, basically.
So accounting can differ in those cases. So they say rate of interest, security, margin, repayment due dates, renewal date, everything has to be filled up. कोई कॉलम आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए. This is what has been said. और अगर ये आपको अब मिलता है so please put it in the long form audit reports as stringently as possible and say that this is in contravention of the circular dated 12th of November 2021. ये तो एक प्रोसीजरल इशू था. इसके बाद के जितने भी हैं changes, those are very, very significant and which have a significant bearing on many, many other aspects basically. Firstly, it goes on to say that with regard to special mention accounts, abbreviatedly SMA accounts, special mention accounts are those where there is some kind of irregularity in the account. SMA 0 account is one where there is an irregularity from 1 day to 30 days. SMA 1 account is that where there is an irregularity between 31 days to 60 days. And SMA 2 account is that where there is an irregularity between 61 days to 90 days. अभी क्या होता था? What has been happening right now? कि बैंक मैनेजर की किसी दिन मर्जी हुई या जिस दिन उसने MIS भेजनी हुई अपने हायर अथॉरिटीज को, उस दिन he will run the statement of SMA 0, SMA 1, SMA 2. This circular says irrespective of the time to be consumed. वो बोलता है ये प्ली नहीं है बैंक मैनेजर के पास कि साहब इसमें टाइम बहुत लगेगा. Irrespective of the plea with regard to the time to be consumed, this has to be a part of my daily end process. इसका मतलब ये है SMA की जो आइडेंटिफिकेशन है, SMA की जो स्टेटमेंट है वो डेली एंड की प्रोसेस है, डेली रन करना है उसका. इसका मतलब कि मेरे पास SMA 0, SMA 1, SMA 2 हर रोज के रोज अवेलेबल होंगे. ये कब पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल तब भी होगा जब मुझे ये पता हो कि उसकी ड्यू डेट्स क्या क्या हैं, रीपेमेंट की सिस्टम के अंदर फीड हो, उसकी DP सिस्टम के अंदर फीड हो करेक्टली. अगर कोई स्टॉक स्टेटमेंट आनी थी वो स्टेटमेंट आई हुई है या नहीं आई हुई है, किस डेट को आई हुई है, वो फीड हो. अगर ये चीजें उसके अंदर नहीं है तो मेरी वो स्टेटमेंट निकल ही नहीं सकती इरेगुलरिटी. लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट. अगर मैंने ड्यू डेट नहीं फीड कर रखी तो इरेगुलरिटी निकलेगी कैसे करेक्टली? अगर मैंने रिन्यूअल डेट नहीं फीड कर रखी तो विद रिगार्ड टू नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर जो इरेगुलरिटी वो कैसे निकलेगी? निकलेगी नहीं किसी भी सूरत में. 30 जून 2021 के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is absolutely clear. No account can be identified as NPA by the bank on manual basis. Every account has to be identified as NPA based through the system. And if at all you identify any account as NPA manually, in that case, the full audit trail has to be there. RBI is absolutely clear. You can go through their circulars, earlier circulars on this particular part. And any bank which has not implemented the system of identification of NPAs only through the system by 30th June 2021 is going to be penalized very, very heavily by the Reserve Bank of India. अगर आपको ये मिलता है कि भाई किसी बैंक स्टेटमेंट में जो एडवांसेस की स्टेटमेंट आपको दी जाती है उसमें डेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनपीएज 30th जून, 30th सितंबर, 28th फरवरी, 31st मार्च, तो समझ लीजिए सब गलत है. इसका मतलब सिस्टम के थ्रू है ही नहीं. इस पॉइंट के साथ दूसरा पॉइंट रिलेटेड है. उन्होंने कहा एनपीए की जो आइडेंटिफिकेशन है, आई थिंक हितेश जी वुड रिमेंबर इट, आई हैड बीन सेइंग इट अर्लियर. एनपीए की आइडेंटिफिकेशन मंथली बेसिस पे नहीं हो सकती, क्वार्टरली बेसिस पे नहीं हो सकती. एनपीए की आइडेंटिफिकेशन डेली बेसिस पे होगी. अगर आपने डेली बेसिस पे ये निकाला है कि भाई SMA 2 कौन सा है, SMA 2 है विच इज 61 days to 90 days.
तो जहां पे 91st डे हुआ वहां पे एनपीए हो गया, दैट इज वेरी क्लियर। तो उनका कहना बड़ा क्लियर है कि जहां पे अकाउंट ओवरड्यू 90 से ऊपर हुआ उस दिन वो एनपीए है, एंड दैट एनपीए रन शुड आल्सो कम डेली। ये किस किस बैंक में मिलेगा ये मुझे नहीं मालूम, ये तो भगवान जानता। स्टेट बैंक में मिलेगा नहीं मिलेगा, कैनरा में मिलेगा नहीं मिलेगा, परंतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक जैसे में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये तो मैं बिल्कुल क्लियर। क्योंकि सिस्टम में इतने पैरामीटर फीड करना इज नॉट गोइंग टू बी ए जोक, इट्स नॉट जोक कि आप इतने पैरामीटर्स फीड करो कि वो आपको एग्जैक्ट डेट ऑफ एनपीए आइडेंटिफाई करके आपके सामने रखते डेली बेसिस के ऊपर। इन्होंने एक काम और कर दिया इस बार इस सर्कुलर के अंदर। पहले सीसीओडी जो था मेरा, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट, वो हम आइडेंटिफाई कैसे करते थे? उसमें वर्डिंग रहती थी व्हेन इट इज आउट ऑफ ऑर्डर फॉर ए पीरियड ऑफ 90 days एज एट द बैलेंस शीट डेट। ये वर्डिंग थी पहले मास्टर सर्कुलर की, आप उठा के देख लेंगे। अब उसने जो एज एट द बैलेंस शीट डेट है वो खत्म कर दिया, इट इज गॉन, इट इज नॉट एज एट द एंड ऑफ द बैलेंस शीट डेट। और उसमें क्या कंडीशन थी आउट ऑफ ऑर्डर की? आउट ऑफ ऑर्डर हो सकता था अगर आपका अकाउंट सैंक्शन लिमिट के बियॉन्ड ऑपरेट कर रहा, या आपकी ड्राइंग पावर सैंक्शन लिमिट में है परंतु ड्राइंग पावर के ओवर रन कर रहा। तीसरा था अगर आपका जो इंटरेस्ट आपका डेबिट हुआ है उस क्वार्टर में उतना उसका क्रेडिट नहीं आया है, या तो क्रेडिट बिल्कुल नहीं आया है या उतना नहीं आया जितना इंटरेस्ट डेबिट हुआ। अगर आपने एज एट द एंड ऑफ द बैलेंस शीट डेट का वर्ड हटा दिया वहां से, तो इसका मतलब है कि डेली बेसिस पे आपको निकालना। आई रिसेंटली हैड ए डिस्कशन समवेयर और मैंने उनको बोला कि इसका मतलब ये है कि आपका डेली बेसिस पे कोई अकाउंट एनपी होगा और डेली बेसिस पे कोई अकाउंट परफॉर्मिंग हो जाएगा कैश क्रेडिट में, तो कम से कम दिस इज गोइंग टू बी द सिचुएशन। क्योंकि एक दिन वो सैंक्शन लिमिट के बियॉन्ड हुआ, मतलब कि 90 दिन के लिए, अगले दिन वो सैंक्शन लिमिट में आ गया या उससे 10 दिन बाद आ गया, देन व्हाट हैपेंस? You will have to upgrade the account. You have no choice basically, because if it is going to be through the system, you have absolutely no choice. My argument with them was कि भाई your master circular talks of the temporary deficiencies. Sometimes the account may remain overdrawn, the sanction limit or the drawing power, because of some temporary reasons. But if you are talking of it to be identified as NPA through the system, in that case, system to system है, system is rule based, system is not any other based. वो तो सिस्टम ने तो अपने रूल बेस के ऊपर उस दिन उसको एनपीए कर देना है, आप कुछ भी करें, और वो 4 दिन बाद ड्राइंग पावर में आ गया तो क्या होगा? फिर आप परफॉर्मिंग करते फिरेंगे। ये जो मूवमेंट है ना एनपीए की पूरे साल की, इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली टफ, इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। They have said that they may look at this particular point, but they say, how does it matter? होगा तो होगा, परंतु someone has to tell them कि भी एक अकाउंट एनपी होगा फिर परफॉर्मिंग होगा, आप मूवमेंट कैसे बनाएंगे सबकी? I think it is not easy. People may or may not realize it sitting in some of the seats, but the position is ये इतना आसान नहीं है जितना वो उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से सिस्टम में आप इतने पैरामीटर्स डालेंगे कि वो ये भी निकाले कि रिन्यूअल 180 दिन से पुराना हो गया या नहीं हुआ? इसमें ये दम है कि वो ये निकाले कि डीपी का स्टेटमेंट जो था वो 180 दिन से पुराना था या नहीं था, क्योंकि अगर एनपी आइडेंटिफाई करना है इवन बेस्ड अपॉन द नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर तो ये देना पड़ेगा। और किसमें ये दम है सिस्टम में कि वो इसके बेसिस पे ये जो 3 अदर पैरामीटर जो मैंने आपको कहे जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स है उसके बेसिस के ऊपर निकाल पाए? आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बट सिंस दिस इज अ पार्ट ऑफ द सर्कुलर वी कैन नॉट अवॉइड इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस एंड वी विल हैव टू डू इट। Another thing that this circular says is
कि टर्म लोन के केस में इंटरेस्ट डेबिट होता था। कुछ बैंक क्या कर रहे थे कि इंटरेस्ट डेबिट किया आपने, उसके मंथ एंड से हम फिर 90 दिन कैलकुलेट करना शुरू करते थे। द बैंक विल कैलकुलेट द 90 days पोस्ट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ। उन्होंने कहा ये नहीं चल सकता भाई, इंटरेस्ट जिस दिन डेबिट कर दिया उस दिन ड्यू है, आप उसको महीने के एंड पे ले जाके फिर 90 दिन नहीं कैलकुलेट करोगे किसी भी सूरत में, बिकॉज सम ऑफ द बैंक्स आर डूइंग। ये सब पॉइंट्स आए हैं which their inspecting teams have actually reported back to the Reserve Bank of India. Based upon their findings, they have come up with these particular points. तो उन्होंने उनके ऑडिट टीम्स ने निकाला कि साहब कुछ बैंक जो है वो ये कर रहे हैं कि भाई मंथ एंड के बाद अगर आपने टर्म लोन के ऊपर इंटरेस्ट डेबिट किया, उसके मंथ एंड के बाद फिर 90 दिन की कैलकुलेशन करते हैं। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, आपने इंटरेस्ट डेबिट कर दिया, मीटर शुरू हो गया, 90 दिन जब पूरे हो जाएंगे अकाउंट को आपको क्लासिफाई एनपीए करना ही पड़ेगा उस पर्टिकुलर केस में। वेरी राइट डिसीजन। मेरा इस डिसीजन से कोई झंझट नहीं है। मैं ये समझता हूँ इससे करेक्ट डिसीजन फ्रॉम द ऑडिटर्स पर्सपेक्टिव तो कोई और हो ही नहीं सकता। आई एम एटलीस्ट हैप्पी एज एन ऑडिटर सो फार एज दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कंसर्न। कोई झगड़ा नहीं है उनके साथ। कभी ड्यू डेट कौन सी है, ड्यू डेट उन्होंने तो ये कह दिया जिस दिन आपने इंटरेस्ट डेबिट किया और डे एंड रन किया उस दिन वो ये मान लिया कि ये ओवर ड्यू भी हो गया क्योंकि उस दिन पेमेंट नहीं आई। सो दैट डेट बिकम्स इंक्लूसिव। ये सर्कुलर बड़ा पढ़ने वाला है, मजेदार सर्कुलर है बेसिकली अपने आप में। फिर उन्होंने एक और बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई। पिछले सालों में क्या होता था कि मैं XYZ कंपनी का अकाउंट कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, XYZ कंपनी ने 4 फैसिलिटीज ले रखी हैं, कैश क्रेडिट भी है, टर्म लोन भी है, LC भी है या बिल भी है। टर्म लोन में इंटरेस्ट डेबिट हुआ या प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू था आने के लिए, वो आया नहीं, 90 दिन से ऊपर हो गया, अकाउंट एम्प्टी हो गया। कैश क्रेडिट उस दिन सही था और बिल वाला या LC वाला भी अकाउंट सही था, परंतु हमें उन अकाउंट्स को भी एनपीए करना पड़ा। द रीजन बीइंग वन फैसिलिटी एनपी, ऑल फैसिलिटीज एनपीए। जो भी वर्स्ट पॉसिबल क्लासिफिकेशन एक फैसिलिटी की है वही वर्स्ट क्लासिफिकेशन सारी की सारी फैसिलिटीज को लगेगी एज पर द पोटेंशियल नोट्स। तो पार्टीज क्या कर रही थी, वो आके जिसकी वजह से अकाउंट एनपीए हुआ था उसको रेगुलराइज कर देती थी। तो ये कहते थे अब अकाउंट मेरा अपग्रेड कर दीजिए, और बैंक वाला भी उसका अकाउंट अपग्रेड कर देता था उसके बेसिस पे। अब उन्होंने एक कंडीशन और लगा दी साथ के अंदर, which will make the life of the industry miserable। ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से कोई दिक्कत नहीं है, बैंक के एंगल से डिफिकल्ट। उन्होंने ये कहा कि सपोज कीजिए आपका टर्म लोन की वजह से आपका अकाउंट एंट्री हुआ था, आपकी एक LC ड्यू थी, आपने LC की पेमेंट तो की नहीं, LC डिवॉल्व हो गई, उसके अभी 5 ही दिन हुए में डिवॉल्व हुआ, परंतु जो उसका पैसा था वो आपने आगे टर्म लोन पे दे दिया और कहा जी ये अकाउंट रेगुलर हो गया मेरा। तो बोलते हैं ये नहीं हो सकता भाई। या कैश क्रेडिट आपका ओवरड्रॉन हुआ इन बिटवीन, सैंक्शन लिमिट से ज्यादा हो गया, ड्राइंग लिमिट से ज्यादा हो गया, वो कहते हैं ये नहीं हो सकता। अगर आपने इस अकाउंट को अब अपग्रेड करवाना तो जितनी फैसिलिटीज में जितनी इरेगुलरिटी है पहले क्लियर करके आइए, देन ओनली द अकाउंट विल बी अपग्रेडेड। ये तो स्थिति गंभीर है, क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्री वाला है वो तो टीमिंग एंड लेडिंग में ज्यादा विश्वास करता कि एक का पैसा आया रोक लिया, जिसको दूसरे को देना उसका रोक लिया, पहले वाले को दे दिया। तो यही वो कर रहे थे कि टर्म लोन का पैसा था वो दे दिया, कैश क्रेडिट के अभी 90 दिन नहीं हुए तो ये अकाउंट परफॉर्मिंग है, LC के अभी 90 दिन नहीं हुए तो पैसा पे करने के लिए परफॉर्मिंग है। तो ये नहीं हो सकता। आपकी LC डिवॉल्व हुए चाहे 5 दिन हुए, 4 दिन हुए, 3 दिन हुए, ये तो केसेस हमने रिपोर्ट किए, मैं आपको बता सकता हूँ। हमारे पार्टनर है सुनील जी, उन्होंने काफी ये केसेस इस तरीके से रिपोर्ट किए हुए थे कि यार ये क्या है, ये तो क्रिटिकल अमाउंट ले आते हैं, क्रिटिकल अमाउंट ला के क्लियर कर देते हैं, बाकी अकाउंट्स में जो मर्जी होता रहे। RBI ने कहा ये नहीं होगा,
आपको हर सूरत में पूरे का पूरे अकाउंट की जितनी फैसिलिटीज है, एक अकाउंट की जितनी भी फैसिलिटीज है, सारी की सारी रेगुलराइज करनी पड़ेंगी। उसके लिए उस पैसे का इंतजाम आप कहीं से भी करें, only then the account will be upgraded, otherwise the account will not be upgraded under any circumstances. I think this is a right measure in the right direction, if you really ask me. एक उन्होंने और बड़ा लॉजिकल स्टेप लिया है, which to my mind, when I say is logical, practically जब मैं देखता हूँ तो इससे बेटर स्टेप नहीं हो सकता बैंक का। इसमें इंडस्ट्री को रिलीफ मिलेगा, वेरी फ्रेंकली। इंडस्ट्री को क्या, बैंकिंग को ही रिलीफ मिलेगा ज्यादा, इंडस्ट्री को तो क्या रिलीफ मिलना। उन्होंने ये कहा कि आपने सपोज कीजिए एक प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया, यू फाइनेंस्ड अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, उसमें आपने मॉरेटोरियम पीरियड दे दिया। जब मैं मॉरेटोरियम की पीरियड की बात कर रहा हूँ तो जो सबसे पहले मैंने चेंज डिस्कस की थी उस पर भी आ जाता हूँ 1 मिनट के लिए। उन्होंने कहा जब आप किसी को सैंक्शन लेटर इशू करते हो और ये कहते हो कि आपका मॉरेटोरियम है 3 साल का, तो सिर्फ मॉरेटोरियम 3 साल का लिख के गुजारा नहीं है, आपको यह भी भरना पड़ेगा उस पर्टिकुलर फॉर्म में कि किस डेट से रीपेमेंट ड्यू है। पहले हम क्या कहते थे, लेटर दे दिया भाई तुम्हारी रीपेमेंट जो है वो 3, मॉरेटोरियम हमने दे दिया 3 साल का, वो कहते 3 साल का किस डेट से, वो बताइए। डेट ऑफ सैंक्शन, डेट ऑफ डिसबर्सल, डेट ऑफ समथिंग एल्स और डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द लेटर। वो कह रहे हैं ना, आप ये लिखिए बड़ा क्लियरली उसके अंदर कि किस डेट से आपकी रीपेमेंट ड्यू होगी, तभी तो ये एनपीए का फिर डेली एंड रन होगा, नहीं तो होगा कैसे, एसएमए का रन होगा, नहीं तो कैसे होगा। यहाँ पे जो मैं लास्ट चेंज की डिस्कशन कर रहा था उसमें उन्होंने कहा सपोज यू गिव ए मॉरेटोरियम फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years, 3 years, 1 year, 6 months, whatever is the moratorium period for that matter, you grant that particular moratorium to the party. After that moratorium period, some or the other, the account becomes NPA. One principle in the prudential norm which has been given otherwise is that the moment an account becomes NPA, the unrealized amount of interest has to be reversed. यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट लिया, प्रैग्मेटिक लिया, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। उन्होंने कहा भाई आपने जब मॉरेटोरियम दिया था इंटरेस्ट का, तो ये मान के दिया था कि इसकी कैश जनरेटिंग कैपेसिटी इस पर्टिकुलर पीरियड में नहीं है, नहीं तो आप मॉरेटोरियम क्यों देते, आप देते ही नहीं मॉरेटोरियम उसको किसी सूरत में। आपने उसको मॉरेटोरियम यही जान के दिया कि इस पर्टिकुलर पीरियड में इसकी कैश जनरेशन कैपेसिटी नहीं है, सो इट इज अ पार्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो अगर ये पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट था, उस केस में आप इस इंटरेस्ट को, जो मॉरेटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट है, इसको रिवर्स नहीं करवाएं। पोस्ट मॉरेटोरियम पीरियड जो भी इंटरेस्ट है वो नहीं आया, उसको आप रिवर्स करवा देंगे। जो मॉरेटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट नहीं आया उसको आप रिवर्स नहीं करवाएं। मैं ये समझता हूं वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैग्मेटिक डिसीजन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमें कुछ भी लगे कि जिससे प्रोविजन में क्या होगा, बैंकों का फायदा होगा, नुकसान होगा, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट पर्टिकुलर पार्ट, बट आई पर्सनली फील अगर मैं बैठा हूं और असेसमेंट कर रहा हूं किसी प्रपोजल की और मैं खुद ही कह रहा हूं कि यार आपके पास क्योंकि कैश नहीं होगा देने को, इसलिए इस पीरियड में आप मुझे इंटरेस्ट मत दीजिएगा। अगर मुझे उसका इंटरेस्ट नहीं देना उस पर्टिकुलर पीरियड में, मॉरेटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट नहीं देना, तो फिर मेरे को उससे रिवर्सल मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप उसको प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट मान लीजिए, उसको प्रिंसिपल का पार्ट मान लीजिए, जो भी आपने करना उसको उस तरीके से कर लीजिए। सो आई थिंक दिस इज समथिंग, ये मेन चेंजेस हैं जो आपकी 12 नवंबर के सर्कुलर से आई है। एक चेंज जो मास्टर सर्कुलर से आई और उसका इम्पैक्ट हितेश जी मेरे हिसाब से ये है कि इस बार की रिपोर्ट्स के अंदर a very large number of disclaimers would be there in respect of the restructured accounts, very large number। मैं तो ये समझता हूँ, जो मेरी डिस्कशन अपने पार्टनर से भी हुई कि भाई
इस केस में किसी भी सूरत में हम कोई रिस्क नहीं लेंगे. विल गिव अ डिस्क्लेमर. आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस इट. आपकी जो भी थॉट प्रोसेस हो प्लीज शेयर इट विद मी राइट नाउ. रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर उन्होंने पहले, हमें याद है कि स्पेसिफाइड पीरियड का कंसेप्ट होता था. एक स्पेसिफाइड पीरियड है, अगर अकाउंट परफॉर्म करेगा सेटिस्फैक्टरली, 1 साल से कम का नहीं होगा स्पेसिफाइड पीरियड, परंतु अगर उस पीरियड में स्पेसिफाइड पीरियड में अकाउंट सेटिस्फैक्टरली परफॉर्म करेगा, विच इज नॉट अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, देन द अकाउंट विल बी अपग्रेडेड. अब उन्होंने 2 कंसेप्ट कर दिए. एक तो मॉनिटरिंग पीरियड ले आए बीच में. मॉनिटरिंग पीरियड और स्पेसिफाइड पीरियड को थोड़ा सा डिफाइन कर दिया. स्पेसिफाइड पीरियड को भी 1 साल से कम का नहीं रखा, 1 साल मिनिमम है, इसमें कोई शक नहीं. और ये कहा कि स्पेसिफाइड पीरियड में कम से कम 20% ऑफ प्रिंसिपल एंड कैपिटलाइज्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आना चाहिए. मॉनिटरिंग पीरियड में कम से कम 10% ऑफ प्रिंसिपल और कैपिटलाइज्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आना चाहिए. स्पेसिफाइड पीरियड में एक बात और कह दी, जिसमें जिस फैसिलिटी में आपने सबसे लंबा मोरेटोरियम पीरियड दिया हुआ, उससे पहले आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते. यू विल नॉट बी एबल टू अपग्रेड दैट बिफोर दैट एक्सपायरी ऑफ दैट मोरेटोरियम पीरियड. पर दोनों में, मोरेटोरियम पीरियड में, इसमें सॉरी मॉनिटरिंग पीरियड में और स्पेसिफाइड पीरियड में एक क्लॉज कॉमन है, वो ये है कि 1 साल से पहले का ना तो मॉनिटरिंग पीरियड हो सकता, ना 1 साल से पहले का स्पेसिफाइड पीरियड हो सकता. फिर उन्होंने कहा कि अगर मॉनिटरिंग पीरियड में किसी अकाउंट ने सेटिस्फैक्टरली परफॉर्म किया, पेमेंट कर दी उसने जो करनी थी, और आप ये कहते हैं कि वो अकाउंट अपग्रेड हो गया, because of the satisfactory performance in the monitoring period, you upgraded that particular account. एक लाइन उन्होंने फुट नोट से दी है. ये मजेदारी ये है हितेश भाई कि ये सर्कुलर की मेन लाइन में नहीं नजर आती जो मैं आप बोलने जा रहा हूं, ये फुट नोट में है कि व्हाट इज सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस. सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस वुड मीन कि जो पेमेंट उसने करनी वो की, एंड एट नो पॉइंट, नॉट इवन फॉर ए सिंगल डे, नॉट फॉर ए सिंगल डे, दिस अकाउंट इज इन डिफॉल्ट विद एनी अदर लेंडर ऑल्सो. वो आप इमेजिन करें, बैंकों में क्या बाकी लेंडर्स का रिकॉर्ड मेरे पास है? मैंने तो अपग्रेड कर दिया अकाउंट को. मेरे पास बाकी लेंडर नॉर्मली लिख देते हैं कि इसका कंडक्ट सेटिस्फैक्टरी. पहली बात तो वो भी नहीं मिलता. जो कंसोर्टियम है उसके भी अगर मुझे मिनट्स मिलेंगे तो शायद 2 महीने पहले के मिलेंगे या 3 महीने पहले के मिलेंगे. ये कह रहा है कि किसी भी लेंडर के यहाँ एक दिन का भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, एक दिन का भी, किसी वक्त भी, इस मॉनिटरिंग पीरियड में या स्पेसिफाइड पीरियड में. अगर एक दिन भी उसका अकाउंट ओवरड्रॉन रहा है, एक दिन भी, अगर कभी एसएमएस 0 में भी आया है, तो ये माना जाएगा कि रेजोल्यूशन प्लान है फेल्ड. फिर आप उसका दोबारा रेजोल्यूशन प्लान दीजिए और उस पर 15% का एडिशनल प्रोविजन कीजिए. मेरा सिर्फ मानना इतना ही है, मैं सिर्फ यही जानना चाह रहा हूं अपने आप से भी, सबसे, कि क्या बैंकों के पास आज की डेट में व्यवधान है कि वो हमको, अगर कहीं पे कोई अकाउंट मल्टीपल बैंकिंग में है, कंसोर्टियम वाला तो आप छोड़ दीजिए, अगर मल्टीपल बैंकिंग में है तो मुझे कई केसेस में तो शायद यही ना पता हो ये किस किस बैंक के साथ डील कर रहा, तो मैं ये कैसे सर्टिफाई कर दूं कि ये बाकी किसी लेंडर के पास जो है वो डिफॉल्ट में नहीं है. तो जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं कि मैं जहां पे रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट अपग्रेड होगा उनसे पूछूंगा किस किस बैंक में. अगर उनका सर्टिफिकेट नहीं होगा तो मैं डिस्क्लेमर दे के आऊंगा कि मुझे नहीं पता कि ये वाकई में किसी और बैंक में डिफॉल्ट में हुआ या नहीं हुआ, वेदर दिस रेजोल्यूशन प्लान हैज सक्सेसफुल और इज अनसक्सेसफुल एज अ कंसीक्वेंस देयर ऑफ. ये मेजर चेंजेस हैं इस साल की, इफ यू आस्क मी. पर मुझे जो सबसे डेंजरस चेंज लगी, एक तो वो थी जिसने ये कहा कि आपने SMA 0, SMA 1, SMA 2 और CC अकाउंट और सारे अकाउंट्स को डेली आपने क्रिएट करना है. और दूसरी ये जो लास्ट वाली है, मुझे इनमें बहुत ज्यादा दिक्कत नजर आ रही है. MSME अकाउंट में उन्होंने कहा
कि आप अपग्रेड कर दीजिए, इवन अगर उसका ओवरड्यू है कभी 30 दिन का तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां तक भी उन्होंने एमएसएमई अकाउंट में छूट दे दी। परंतु मुझे जो असली दिक्कत नजर आ रही है वो रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स में नजर आ रही है। रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स में मेरे पास बाकी लेंडर से सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे। लेट्स बी क्लियर सो फार एज दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कंसर्न। नाउ आई एम कमिंग टू कैश क्रेडिट अकाउंट्स, जो मेरे मतलब कि मुझे ये लगता है कि सबसे टफ एरिया है आइडेंटिफाई करना। बेसिकली किसी अकाउंट को एनपीए में जब मैं कैश क्रेडिट की बात करता हूँ। I was talking to one of the bankers long time back, and he said, Amarjit, one thing I will like to tell you, and he was the CMD of the bank. He said, one thing I can tell you, that so far as the term loans are concerned, we cannot hide the term loans to be NPAs for more than a quarter or maximum 2 quarters. Once the payment is not coming principal or interest, it has to become NPA. If not today, it will become tomorrow. But so far as cash credit is concerned, he said, this account does not become NPA till the time we want it to become NPA. Very interesting statement. Why I say interesting statement? It is a factual statement, if you ask me. Because the weakest area in our checking is the cash credit account, if you ask me. हम समझ ही नहीं पा रहे कि कैश क्रेडिट अकाउंट को हमने चेक कैसे करना। I'll give one example, just one example right now before you. We are doing one of the accounts, manufacturing company, 33 crore turnover of the manufacturing company. Raw material, 3 lakh rupees. Work in progress, 0. And finished goods, about 15 lakh rupees. अब मुझे बताइए वो अकाउंट परफॉर्मिंग हो सकता है या नहीं हो सकता? I don't have to comment. I don't have to comment upon it. How in a manufacturing company the work in progress can be 0? 1 दिन का ही होगा, 2 दिन का होगा, 3 दिन का होगा। रॉ मटेरियल 3 लाख का होगा, 33 करोड़ की टर्नओवर के लिए, जिसकी मंथली टर्नओवर 2.5 करोड़ रुपया है, उसके पास रॉ मटेरियल कितने का होना चाहिए? 15 दिन का भी होगा तो कितने का होगा? 10 दिन का भी होगा तो कितने का होगा? हफ्ते का होगा तो कितने का होगा? वर्क इन प्रोग्रेस अगर हफ्ते भर का भी होगा तो कितने का होगा? फिनिश्ड गुड्स अगर महीने भर के भी होंगे तो कितने के होंगे? 15 दिन के होंगे तो कितने के होंगे? As an auditor, accept it. I, as an auditor, I'm willing to accept this. That this is the audited balance sheet of a manufacturing company, and I am happy that this particular account is a performing account. I think somewhere or the other, हम कैश क्रेडिट अकाउंट को सिर्फ ये देखते रहते हैं कि इसमें ऑपरेशन क्रेडिट डेबिट है या नहीं है, दैट्स ऑल। जो उसके मेजर फीचर्स हैं, 33 करोड़ की टर्नओवर के अगेंस्ट अगर वर्क इन प्रोग्रेस 0 है तो वो फैक्ट्री बंद है आज की डेट में। फिर वो कुछ और कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा होगा, इज डेफिनेटली नॉट डूइंग द मैन्युफैक्चरिंग। उसने लिमिट ले रखी है सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग के वजह से। I will give you another example. भाई कैश क्रेडिट में डेटर्स की भी लिमिट आ जाती है ना। When I talk of hypothecation of stocks, either it is hypothecation of stocks or hypothecation of the debtors. एक पर्टिकुलर केस में 1/4/2015 से लेके 31/3/2016 तक की टर्नओवर है 205 करोड़। I'm again repeating the figure. For the full financial year, the turnover is 205 crores. Opening debtors are 55 crores. Opening debtors are 55 crores. And the debtors as certified on 31st December 2015 are 296 crores. फिर बोल दो फिगर्स हितेश जी। 55 crore is the opening debtors figure. Total turnover 205 crore है साल की 31 मार्च तक की।
पर 31 दिसंबर तक की 9 महीने की सेल के डेटर्स 296 करोड़ है। तो किसी ने तो ऑडिट किया है ना, कंपनी का भी ऑडिट किया और ब्रांच का भी ऑडिट किया। We fail to understand what kind of an audit of working capital limits we are doing. If your total turnover is 205 crore, opening debtor is 55 crore, even if I consider no amount, single amount has been received, everything is on credit, 260 crore maximum. But if nothing is being received, तो वैसे ही एनपीए होना चाहिए, तो डेटर्स की लिमिट कैसे बनेगी? और अगर आ रहा है तो फिर उसमें कितने के डेटर्स होने चाहिए? आप लगा लीजिए 205 करोड़ के क्वार्टर, एक क्वार्टर के डेटर्स होने चाहिए। जो 55 करोड़ की पहली फिगर है वही खड़ी होनी चाहिए। 60 करोड़ मान लीजिए, 70 करोड़, 296 करोड़ के डेटर्स एज ऑन 31 ऑफ दिसंबर। बैंक भी एक्सेप्ट करता, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, और पार्टी भी एक्सेप्ट करती है, पार्टी का ऑडिटर भी एक्सेप्ट करता। मुझे समझ नहीं ये कौन सा ऑडिट है, क्या वो कंपनी ऑडिट हो या ब्रांच ऑडिट हो, किस तरीके का ऑडिट है वो कैश क्रेडिट का? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। बट दीज आर ग्राउंड रियलिटीज। और एक केस तो आपको मालूम ही है हितेश भाई, which I can speak of. We were auditing a particular account. They were manufacturing mint. जुबान को काफी ठंडा करती है, हमारे दिल को बहुत ठंडा किया उसने, सीधी सी बात है, हृदय को बहुत ठंडा किया। They were manufacturing mint. Their turnover was about 1200 crores in that particular year. Their work in progress was about 1000 crores or 900 crores. It was more or less equivalent to the turnover. Then we started looking कि इनकी operational cycle में कितने का work in progress था, operating cycle में। ऑपरेटिंग साइकिल में सपोज कीजिए आपने इनिशियली सैंक्शन किया हुआ 3 महीने का, 2 महीने का, तो कितने का होना चाहिए वर्क इन प्रोग्रेस? लिमिट तो वहीं से निकलेगी ना, ऑपरेटिंग साइकिल से निकलेगी। देन वी स्टार्टेड लुकिंग इनटू द फाइल ऑफ द बैंक एंड व्हाट इज स्टार्टलिंग रेवलेशन। हमारी तो सारी अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स बदल गए उसमें। वो लिखता है, फाइल के ऊपर लिखता है average sale price realization in respect of this is 1300 rupees per kg or 1200 rupees per kg, जो भी था। और जी वर्क इन प्रोग्रेस इज बीइंग वैल्यूड एट 2400 रुपीज पर केजी। बदल गए ना सारे के सारे फंडामेंटल भी बदल गए। Average sale realization, average sale price realization is about 1200-1300 rupees per kg, and the work in progress has been valued at about 2400 or 2300 rupees per kg. तो हमने पूछा भाई आप लॉस को फंड कर रहे हो क्या? क्योंकि अगर ये वर्क इन प्रोग्रेस है तो 200-250 रुपए ऊपर और भी लगेगा। 2600 रुपए की चीज 2500 रुपए की चीज 1200 रुपए 1300 रुपए में बिकेगी, तो आप क्या लॉस को फंड कर रहे हो? तो बोले नहीं तो डीपी नहीं बनेगी जी। मैंने कहा डीपी बनाना हमारी जिम्मेवारी है, तुम्हारी जिम्मेवारी है। डीपी बनाना तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। डीपी तो उसकी बनेगी या नहीं बनेगी वो भगवान जानता, परंतु मुझे तो उसको ऑडिट करना है, आपको उसको फंड करना। हाउ कैन यू फंड इट्स लॉसेस? Absolutely strange if you ask me. This is what it is. And these cases are not far and few. ये आपको मैं बता सकता हूँ, ये थोड़े केसेस नहीं है ऐसे। क्योंकि जो स्टॉक स्टेटमेंट आती है वहां पे, स्टॉक स्टेटमेंट में तो सीधा ही लिखा होता है इतनी क्वांटिटी इतनी अमाउंट, रेट भी नहीं लिखा होता किस रेट के ऊपर मैंने वैल्यू किया। मैं तो ये भी कंपेयर नहीं करता कि जो डेटर्स 6 महीने पहले चल रहे थे वही अभी चल रहे हैं या नए वाले आ गए हैं। The same debtor, same value gets repeated, keeps on getting repeated. तो भाई बैंक ने लिख के दिया 3 महीने से ऊपर के डेटर नहीं कंसीडर करूंगा फॉर पर्पस ऑफ डीपी, या 6 महीने से ऊपर के नहीं कंसीडर करूंगा, तो किसकी ड्यूटी है? मेरी ड्यूटी नहीं है कि एज एन ऑडिटर ये चेक करना, मेरी भी ड्यूटी है। और मैं कैश क्रेडिट में तो एक बात बार बार रूफ टॉप से खड़े होकर बोल रहा हूँ कि भाई अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस
एक काम जरूर करिए, उसकी जो लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट है उसको उसकी स्टॉक स्टेटमेंट जो उसने फाइल की है लास्ट में उसके साथ कंपेयर जरूर करिए। और उसमें आपको क्या मिलेगा, क्लियर मिलेगा कि जो स्टॉक स्टेटमेंट में उसने डेटर्स की फिगर, स्टॉक्स की फिगर दी हुई है वो ऑडिटेड में कम है, और क्रेडिटर्स की जो फिगर स्टॉक स्टेटमेंट में दी हुई है उससे 3 गुना है ऑडिटेड बैलेंस शीट में। बीपी निकलती नहीं ऑडिटेड बैलेंस शीट के बेसिस पे किसी भी अकाउंट में। और जब आप बैंक वाले के पास जाते हो वो कहता है जी ये तो एक पर्टिकुलर डे का है। अरे एक पर्टिकुलर डे नहीं, मैं इससे पिछले साल की बैलेंस शीट पे भी चला जाता हूँ। आई मस्ट गो। मैं एक साल की बैलेंस शीट के ऊपर नहीं अपना कभी डिसीजन करता। आई विल गो टू दी अर्लियर बैलेंस शीट ऑल्सो। और अगर अर्लियर बैलेंस शीट में भी वही हाल है तो फिर तो भैया उस डेट से, पुरानी डेट से उस अकाउंट को एनपीए करके ले आना सीधा, कोई डरने की बात नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल स्टैंड विद यू, माइंड इट। 100% बोलता हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको अपोज नहीं करेगा इस केस में। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि एक अकाउंट है कैश क्रेडिट का, एक पैसे का क्रेडिट नहीं आया उसमें और एक पैसे का डेबिट नहीं है, सिर्फ 8 एंट्रीज पड़ती हैं, इंटरेस्ट डेबिटेड इंटरेस्ट क्रेडिटेड हर क्वार्टर में। तो वो कंपनी चल रही है क्या? एक बार जाकर देख तो लो यार उसको। आफ्टर ऑल बैंक मैनेजर ने जो चिट्ठियां उसको लिखी हुई उसको पढ़ लीजिए, उसी से शायद आपको पता लग जाएगी क्या हो रहा है। वो पार्टी सिर्फ आपको इंटरेस्ट दे जाती है, दैट इज द एंड ऑफ इट। और अगर आप ऑडिट कर रहे हैं किसी ऐसी ब्रांच का जिसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज काफी हैं, कंपनीज काफी हैं, तो यार अगर 15 कंपनीज हैं उसमें से 2 में जिसमें आपको कहीं पे माइंड में 6 सेंस हिट कर रही है, उनको एमसीए में जाके उनकी बैलेंस शीट डाउनलोड कर लो यार। प्राइवेट लिमिटेड होगी तो बैलेंस शीट तो डाउनलोड कर ही लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं भी होगा। और अगर आपकी जो आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट दे रखी है उसके साथ कोई फिगर नहीं मिलती स्टॉक की या डेटर्स की, तो फिर जो करना हो करके आ जाइएगा। आई लीव इट टू यू। मैं ये कह रहा हूँ अगर 15 है उसमें से 2, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 15 में से 15, कुछ करें तो सही, अपने रिकॉर्ड पे तो रखें कि हमने ये किया था, हमने ये भी चेकिंग की थी। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आज की डेट में एक बात आपको और बता दूं, अगर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, चाहे वो कंपाइल्ड फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों ना हो, अगर उस सर्टिफिकेट के ऊपर अगर यूडी नहीं लगा हुआ है तो जस्ट थ्रो इट इन द डस्टबिन, इट इज नॉट रिलायबल। जो आपने करना हो करिए, बिकॉज यूडिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। यूडिन ना लगने का मतलब क्या है हम सब जानते हैं आप, क्योंकि हम भी तो उसी का पार्ट है, हम भी तो उसी का पार्ट है। साइन कर दिए किसी सीए ने परंतु यूडिन नहीं जनरेट किया। कंपाइल्ड फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी यूडिन तो जनरेट करना है। अगर डेटर्स को भी उसने सर्टिफाई किया तो यूडिन जनरेट करना है, स्टॉक को सर्टिफाई किया तो भी यूडिन जनरेट करना है। और अगर यूडिन जनरेटेड नहीं है तो प्लीज इग्नोर दोस थिंग्स। और फिर उसकी जितनी गहराई में जा सकते हो देख चेकिंग में, उतनी गहराई में चले जाइएगा उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, उस पर्टिकुलर अकाउंट में। तो मेरा अपना मानना यह है कि कैश क्रेडिट में सिर्फ आप ऑपरेशन ऑफ अकाउंट देख के नहीं चल सकते। ऑपरेशन ऑफ अकाउंट में तो ये भी है कि टर्नओवर वो दिखाता 15 करोड़ की और आपके पास उसके क्रेडिट नहीं आते 2 करोड़ के भी। जा कहाँ रहे हैं? कैश में ट्रांजेक्शन कर रहा है क्या? क्योंकि आजकल तो सरकार वाले पीएमएलए में बहुत एक्टिव हो गए ना। कल पता लगे आपसे ही पूछ लिया कि यार आपने क्यों नहीं पकड़ा उस वक्त कि ये कैश ही ट्रांजेक्शन कर रहा है सारे के सारे। मैं डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि लोग मुझे कहते हैं मैं डराता बहुत हूँ। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ। क्योंकि आजकल तो ईडी वाले पहले बात ये करते हैं भी ऑडिटर को बुलाओ कहाँ पे। ऑडिटर क्या करेगा यार? जिसने किया पहले उससे तो पूछो। उससे कोई नहीं पूछता, हमसे पहले पूछते हैं कि बताओ जी आपने क्या चेक किया था। तो कैश क्रेडिट को जितना माइन्यूटली, जितना डीप में जाके चेक कर सके उतना कर लो, क्योंकि सारी की सारी साइक्लिंग ऑफ द फंड्स जो है वो यहीं पे है।
और अगर आप पार्टी की बैलेंस शीट देखते हो और उसमें आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नजर आती है 60-70%, जो AS18 का डिस्क्लोजर है या इंडिया S24 का डिस्क्लोजर है, उसमें अगर 70-80% रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नजर आते हैं तो ये देख लीजिएगा कि वो रिलेटेड पार्टीज की पोजीशन क्या है भाई। पैसा आएगा भी नहीं आएगा। यहाँ ABG शिपयार्ड वाला ही हाल होगा कि एक पार्टी ने, रिलेटेड पार्टी ने दे दिया ऑर्डर इसको कि भैया ये एग्जीक्यूट कर दो, शिप बना दो मेरी, शिप तो बनी नहीं, पैसा चला गया सारे का सारा, और ऑडिटर ने किसी ने पूछा नहीं आने वाले सालों में कि भाई ये शिप तो बन नहीं रही तो इसका कर क्या रहे हो। ये सब हुआ और सिर्फ 22,842 करोड़ रुपए का फ्रॉड है, सिर्फ 22,842 करोड़, 28 बैंक इन्वॉल्व है सिर्फ। एक ऑडिटर ने नहीं लिखा कि क्या होना इसमें। तो मैं यहीं रुकना चाहूंगा, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो मैं जरूर आंसर करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। Thank you very much. So anyone has any answers, they can type in the chat. I think we have भाई one पूछ ले यार, question. हैंड रेज करके पूछ ले। 35 Yeah. So we have one question from one second. 40 तो लोग हैं हम, 40 में तो हैंड रेज करवा के पूछ लो यार, क्वेश्चन क्या दिक्कत है। Correct. So sir, so anyone who has questions can unmute himself and he can ask question. Okay, I think Parag had asked first question. Parag, you can unmute yourself and ask it directly to sir. PAVIP also same thing. Sir, am I audible? Yes. बोलिए Go सर। on. Yes, you are audible. Great. Go on, please. Yeah, sir, we have come across instances where at the time of renewal or sanction, bank used to bypass debiting charges and processing fees to the CC accounts. And while reviewing the operation of CC accounts, they deferred until 31st March. So a year has been closed. So now we found out this revenue leakage. Now, had these charges and processing fees been accounted on due date, account would turn out to be NPA. So आप कर दीजिए। I'm fully with you. we insisted for Actually, that. So he said कि हमने किया होता तो पे भी कर देता। तो that is मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। आई एम एग्रीइंग विद यू। अगर जिस दिन रिन्यू किया था उस दिन ये प्रोसेसिंग फी या जो आपके रिन्यूअल चार्जेस हैं वो डेबिट होने चाहिए थे। अगर नहीं किए और अगर वो डेबिट करते तो अगर अकाउंट एनपीए होता, बिकॉज द लिमिट वुड हैव बीन एक्सीडेड, प्लीज कन्वर्ट इट इनटू एनपीए, डोंट वरी अबाउट इट। और सर ये 31st मार्च को दे आर अकाउंटिंग इट, अभी बैक डेटेड एंट्री तो सिस्टम अलाउड नहीं करेंगे। 31st मार्च वाले की तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, Exactly. सेंसिटिविटी नहीं है, इफ यू आस्क मी। Yeah. Sir, another scenario we come across while reconciling trial balance with financial statement, we found out some GL accounts with abnormal plus minus thing, and we asked for the explanation. So they said it is escalated to HO, and we don't have any explanation. It is below 1 crore, so we did not qualify as a fraud. We disclosed that categorically in our audit report, but does our role end there, or we need to do something more? आपके मेन ऑडिट रिपोर्ट में आपने क्वालिफाई किया या लॉन्ग फॉर्म में लिखा? मेन ऑडिट रिपोर्ट में अदर मैटर मेन ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफाई कर दिया तो योर रोल एंड्स देयर, डोंट वरी। Okay, sir. Yes, sir. Great. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, I have one question, sir. सर आप भी पूछेंगे तो मेरे को दिक्कत है। नहीं, Anyway, आप पूछिए। because there is a confusion among the speakers also in western part, more particularly I am telling you, sir. Yeah, The only point is that the loan sanction under the emergency credit guarantee scheme of central government, in security wise classification, it will be considered as what? Secured by Government tangible guarantee. To the extent the loan has been given post COVID under the guarantee scheme, it will be secured by the government guarantee, otherwise it will be against the other collector. 20% or 30%. Two stages were there. 20% or 30%. जो भी proportion. That is fine, no? That is Right. And so far as the NPA classifications norms related to those accounts are concerned, because in my opinion, there will be the chances. ratio में चलेगा. Exactly. Now, sir, the point is that if my principal account turns bad,
during the financial year 21-22, in all probability there is a chances this time, because it is related to previous year. So if that account turns bad, so going by the same borrower wise classification, might say for example my outstanding is 1,000 rupees and 200 is the government guaranteed account. तो gross NPA will be, करूंगा, उतना प्रोपोर्शन छोड़ दूंगा मैं, और वो मेरा ख्याल हमें अकाउंटिंग पॉलिसी में उसी तरीके से डिस्क्लोज करवाना चाहिए. Exactly. So the point is that there is a different views for this. One of the stalwart means who is expert is, he is suggesting that we should include the 200 rupees also into gross. That would be absolutely wrong. Sovereign guarantee है यार, मरवाएंगे हमें तो वो टांग देंगे सरकार वाले उल्टा कि यार हमारी गारंटी को आप चैलेंज कर रहे हो. नहीं, I have understood it like that only what you are suggesting. The only point here is that it will not be classified as वो portion नहीं होगा उसका. वो portion नहीं होगा. Number 2 is that in case of term loan, para number 2.1.3 which you discussed, sir, of the master circular, but the clarification in 12th November circular is that it will be effective on or after 31st March 2022. So it will be effective 31st March 2020. एक मिनट सर, सर्कुलर है मेरे पास. You are talking of 15th February circular or 12th November circular? नहीं, para number 2.1.3 of the master circular, sir. Master circular तो पहले आया है. हाँ सर, अक्टूबर में ही आया है ना. So the point is that अक्टूबर में आया, ये सर्कुलर जो है ये बाद में आया है सर्कुलर. Exactly, sir, but it is governed in that para number 2.1.3 only, that in case of interest payments, banks should classify an account as NPA only if the interest due and charge during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter. Please. These instructions shall be effective from March 31st, 2022. तो जो आपके अकाउंट NPA होने हैं as for the last quarter, वो तो इसी बेसिस पे हो जाएंगे ना. That is fine. So on or after 31st March 2022. So if during, after नहीं होगा, ये लिखा है from March 31st, 2022. हाँ sir, so my interpretation is that only, that once this clarification is effective from 31st March 2022 onwards, rather 31st March 2022 onwards. सर इसमें क्वार्टर एंड का बेनिफिट चला जाएगा तो 90 days. I think you have a point. Accordingly, in respect of any borrower account which becomes overdue on or after March 31, 2022, its classification as NPA shall be based upon the account being overdue for more than 90 days. Sir, that is the case. Sir, in my opinion, आपकी बात में है दम है, इसलिए मैं रुका हूँ. हालांकि अगर मैं ये पढ़ता हूँ, the instruction shall be effective from March 31, 2022, तो मुझे ये लगता है कि जो लास्ट क्वार्टर है उसमें ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, परंतु उसके आगे की लाइन पढ़ता हूँ तो ये लगता है कि it will be effective 1st April onwards, on or after, right? And the last issue is about in case of term loan accounts, wherever the borrower, say for example, I am sanctioned, I am enjoying the housing loan facility of 1 crore rupee, and if I am repaying as per my original repayment schedule, but on payment of some lump sum amount into my account, right? वो controversial चीज है, वो RBI भी clarify नहीं कर पा रहा. That is the case. आपका point. जिसने advance में payment कर दी उसका क्या करें? हाँ, exactly. So the point. वो Reserve Bank of India भी clear नहीं कर पा. So if after paying the lump sum amount, अभी कुछ मेरी informal discussions हुई थी इन circulars को लेके with regard to its practicality basically. तो उसमें आपके वाला point भी बिल्कुल discuss किया हमने. उसमें उन्होंने कहा है कि will like to clarify, परंतु अभी clarification मेरे पास तो नहीं किया है. अच्छा, okay, that's fine. The only thing is that for the relaxation under these COVID circulars issued by the Reserve Bank of India from time to time, that is fine. Again, the question is that only one-time benefit can be available to the MSME.
Yeah. So if my particular MSME account has undergone restructuring by the 2018 circular due to GST, whether am I eligible to be again नहीं, restructured? वो अगर वो restructuring fail है तो फिर fail है. फिर तो नहीं, सब fail कुछ नहीं. fail है. Fail नहीं है sir. I am repaying as per my original revised restructured plan because of the COVID GST relaxation in 2018. So now the point is, under the circumstances, whether the borrower can again restructure or can request or invoke the I don't think. If you restructure it now, it is a then repeated restructuring, right? Then it goes out. Then it's fine. Okay, so we are on the same page, right, sir? Thank you. Thank you so much, sir. Thank you very much. That's it from my side. Okay, boss. Thank you very much. Yeah. Thank you so much, Karan. Please. Thanks to you. Thanks Arre, to no, sir. Hitesh bhai, you actually, whenever I speak to you, I also learn something. Arre, nahi, sir. Thank you, sir. Thank you so much. क्योंकि जो इश्यूज अभी आपने डिस्कस किए वो शायद मैंने पार्टनर से डिस्कस नहीं किए, हालांकि मेरा व्यू उसमें बिल्कुल क्लियर है जो आपका व्यू है. लेट्स बी क्लियर. So now I will tell him also to look into these particular things. Right, sir. Right. That is what is more important. Great, sir. Great. Thank you. Karan? Yeah, is Romil here? Anyways, Hello? Yeah. Yeah, Hello? Romil. Okay. Yes. Yeah, Romil, I'll hand it over to you. Okay. Hello? Yeah. Yeah, go on. Hello? Yes, yes. Romil, you are audible. Go ahead. Yes. Thank you, sir, regarding for giving us the background of the statutory bank branch audit and detailed analysis of the master circular regarding the bank branch audit and giving the future of the bank branch audit regarding the in future. Now, thank you, sir, for the giving up the wonderful session regarding bank branch audit in practical issue. All right. Thank you, Chopra sir. Thank you very much for a wonderful session, and thank you, Hitesh, and Before we end, Karan. Yes, Monish. Day of the financial year, and I am the president of the Chartered Accountant Association, Ahmedabad. My tenure ended yesterday, but still as a caretaking president for the Chartered Accountant Association. I thank you, sir, so much for giving us this time and sharing your valuable inputs. Sir, a token of love and appreciation from the side of the Chartered Accountants Association, Ahmedabad, would be reaching your place in some time. And thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. सबको नए वित्त वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. Thank you, sir. मैं ये चाहूंगा कि सबकी रिसीव जितनी बढ़ सकती हैं बढ़े. बैंक ऑडिट के से बढ़े या ना बढ़े, परंतु बाकियों से बढ़ के बैंक ऑडिट की कमी भी पूरी कर दें. That's all I can say, and let it be a COVID-free year. Very frankly. Yes, sir. Let's have more of the prosperity, happiness, peace. I think more important is the mental peace for that matter. हम peaceful ज़्यादा रहें, घर वालों को ज़्यादा time दे पाएं. I think that is all I can wish for you. Wish you for all. Thank you very much. Thank God you, bless you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you for the blessing, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Hitesh bhai. Thank you, sir. Thank you. Bye. We'll be in touch.